Good morning, team. UBS to buy Credit Suisse for nearly $3.25 billion. Now, this will calm the turmoil in the debt market, which is happening in deposit market. And there is few more rumors or news which is going on that all central banks will coordinate and provide liquidity. So I think the crisis which has erupted, the central banks are aware of it and it will be cooled down. So due to which I don't see market correcting too much, but there will be inherent weakness. That is something we need to understand. But if quantitative easing is coming in some other form by the bailouts or something, that is also positive for market. So we are in no man's land. We can move higher, we can move lower, but it is a very fluid market. So one has to be aware of the risk involved. And the short position in the futures is one of the highest, is what data is saying. So normally when you are too negative, market doesn't go down. So we need to have your open mind. So whichever way market starts to trade after few days or few weeks, that could be a direction for a short-term purpose. Sun Pharma, there is a breakthrough in their R&D development. In phase 3 data showed that scalp pad hair regrowth is happening. So this is positive for Sun Pharma. Godavari Power Board has approved a proposal to buy back up to 250 crores. Adani Group has suspended almost 34,900 crores of petrochemical project at Mundra in Gujarat. So the company is now focusing to restore and consolidate its business. GMR Airport announces merger of GMR Airport infrastructure. It is something positive because it is an internal thing. Moltec Packaging has been awarded as selected packaging material supplier by Grasim for Brilla Paint division, for which Moltec will step up co-located facility in Raigad district, Maharashtra. VA Tech Wabag has secured an order worth of 800 crores towards design, build, operate for reconstruction and operation of Palga sewage treatment plant in city of Dhaka. This is in Bangladesh. It is for 200 million liters per day sewage treatment plant. And in one interesting news, Putin has said that he is ready for negotiation, and we need to understand China has brokered a deal between Iran and Saudi about few days back, and China has relationship with few countries, and they are able to mediate, which is not the case with the US. So even in Russia-Ukraine war, China can speak to Russia as the president is going to Russia. From there, he'll be speaking to Ukraine president also, Levinsky. So there are chances that deal might happen. If that happens, it will pave way for cooler inflation, which is very positive for market. So whether it happens or not, but we need to have an open opinion about this. GMR Airport also will rise 2,900 crores for FCCB. It will be for 10 years and 1 day, and it will be given for Paris-based airport operator, Airports de Paris SA. BPCL has allotted 936 crores at 7.58%. Titagar Wagon proposed to change its name to Titagar Rail System Limited, appoints new director for its freight business. Nazara Tech update about buyback of 16 crores. So now the promoter stake has increased from 70.71% to 74.15%. Adani Wilmar's Fortune brand has gone hyper local, introduced a range of regionally customized pulses in northern and eastern part of India. SJVN said its green energy subsidy has bagged a 200 megawatt solar project entailing an investment of 1,000 crores for Maharashtra.
and this will be constructed in 18 months. India's forex reserves have declined to 3 months low of 560 billion. RBI data showed. GAIL India has signed a MOU with Shell Energy India to explore prospect of importing, handling of ethane and other hydrocarbon. GAIL has about 14,830 kilometers of pipeline, so they will be using in this. We are very positive on GAIL. So for a long-term investor, GAIL is a very good investment. Government said IFCO and Coal India will manufacture nano DAP for a period of 3 years. IFCO has informed that it is setting up a production capacity of 2 lakh bottles of 500 ml per day. PLI scheme has propelled electronic exports. So this is very interesting data. 11-month data is saying April 2022 to February 2023, electronic exports have jumped 61.57% in rupee terms. So the last year export similar period was 1,03,000 crores. This year it is 1,66,000 crores. And mobile accounts for 47% of this export, and mobile export for this 11 months has been 78,375 crores. It is a huge number. Last year it was 38,000 crores. It is more than doubled. So DLF to invest around 3,500 crores in next 4 years to construct housing projects in Gurugram. So this is positive for DLF. Already they have done a sales of 15,000 crores, and they are again investing to build more properties. Indian Railways has completed electrification of Chhattisgarh broad gauge network of 1,170 kilometer route, and Chhattisgarh has become 100% electrified in railway project. Havel's new facility to manufacture air condition at Sri City, Chittoor district in the state of Andhra Pradesh. So on 17th March, this thing has started. Sula Wines has said 2023, the grape harvest is shaping to be excellent in terms of quantity and as well as quality. This is a third consecutive excellent harvest is what they have said. Greenply has started trial production of MDF at its unit situated in Vadodara, Gujarat. Soon the commercial production will start. With that, over to you, Hitendra. Yeah, thank you, sir. Good morning, everyone. हम इस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. स्टार्ट करते हैं एसकेएफ इंडिया से. एसकेएफ इंडिया ने कहा कि कंपनी ने अप्रूव कर दिया कि इन्वेस्टमेंट 26% ही उनके एससीबी में रहेगा, और ये कंपनी कमीशन करी कैपिटल प्रोजेक्ट जो कि विंडा सोलर ही ओपन एक्सेस रहेगा बैंगलोर प्लांट के लिए. नेक्स्ट न्यूज है रेल विकास निगम के लिए कंपनी को लोएस्ट बिडर सिलेक्ट किया गया. कंपोजिट पैकेज के लिए 4 कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे रिलेटेड. न्यू ब्रॉड गेज रेलवे लाइन रहेगा हरियाणा. ऑर्बिटल कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट है. जॉइंटली वर्थ देखा जाए तो 1,088 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है. एबीएफआरएल की भी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो गई है. क्रिसिल ने उसको रिवाइज कर दिया है जो कि AA से AA+ कर दिया, और आउटलुक लॉन्ग टर्म की उनकी जो फैसिलिटीज को स्टेबल डिक्लेयर किया है. नवीन फ्लोरिन ने भी कहा कि उनकी जो होली ओन सब्सिडी वो केपेक्स कर दिया 450 करोड़ का, और 40,000 टन का एनुअम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वो बनाएगी उनके दहेज प्लांट में, और ये कैपेसिटी अगले 2 साल में स्टार्ट हो जाएगी प्रोडक्शन के लिए. नेक्स्ट न्यूज है आईआरसीटीसी ने. आईआरसीटीसी के बोर्ड ने पास किया कि आईआरसीटीसी जो विड्रॉ करी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स वो केटरिंग 5 ईयर से नहीं करके रिन्यू इसको ऑनगोइंग बेसिस पे करेंगे. और आईआरसीटीसी करंटली प्रोवाइड करती है क्लोज टू 1200 ट्रेन को, और ये जो इम्प्लीमेंट होगा 245 प्रीमियम ट्रेन के लिए रहेगा. और आईआरसीटीसी ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि क्योंकि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स 6 महीने से 1 साल के लिए रहेंगे. अगली न्यूज है कोचिन शिपयार्ड को. कोचिन शिपयार्ड को एक प्रेस्टिजियस ऑर्डर मिला है 550 करोड़ का ग्लोबल जायंट सैमस्केप ग्रुप से, जो कि नॉर्वे बेस्ड कंपनी है. एपीएल अपोलो के लिए भी न्यूज है. उन्होंने कहा कि वे लॉन्च कर रहे हैं नेक्स्ट जेन स्टील बिल्डिंग सॉल्यूशन जो कि इंश्योर करेगा फास्टर कंस्ट्रक्शन. एपीएल अपोलो और आईटी रुड़की ने ये साथ में जॉइंट रिसर्च करके डेमोन्स्ट्रेट किया, और ये बेसिकली यूज होगा हाई राइज बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज, डेटा सेंटर, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए. और इसमें इकोलॉजिकल बैलेंस भी रहेगा क्योंकि उसमें 0 एयर पॉल्यूशन रहेगा, 0 वाटर वेस्टेज रहेगा, और थोड़ा सा कॉस्ट और टाइम इफेक्टिव भी रह सकता है कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन प्रोसेस से.
टाटा स्टील ने कहा कि उनकी जो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स और टेम्पलेट एक एमओयू साइन कर रहे हैं 8 प्रोडक्ट्स कैटेगरीज के लिए और टोटल 57 एमओयू साइन हुए गए हैं और 27 कंपनीज के साथ ये कवर गए और 20 सब कैटेगरीज मिनिस्ट्री के साथ साइन की गई है। वेप्रो के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज है। वेप्रो ने कहा कि वो उन्होंने 120 एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया है यूएस में एज अ पार्ट उनके बिजनेस रिअलाइनमेंट के लिए कहा है। कंपनी ने ये भी कहा है कि ले ऑफ जो है मई से स्टार्ट होंगे और कंपनी ने प्रीवियसली भी जो फ्रेशर्स को ज्वाइन किया जो ज्वाइन होने वाले उनको कहा लोगों को पे ज्वाइन करने के लिए और सीनियर लेवल एग्जिट्स और पे कट्स भी उन्होंने सिग्निफाई। थोड़ा सा हमें वेप्रो के लिए लग रहा है आगे की जो जर्नी है टफ हो सकती है यहाँ से क्योंकि डिमांड स्लो डाउन दिख रहा है और ये अच्छी नहीं है कंपनी के लिए ओवरऑल। रिलैक्सो के भी जो सीएफओ है हमारी मीटिंग हुई उन्होंने कहा कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट डोमेस्टिक फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए और स्ट्रैटेजिक जो कोविड-19 के लिए थोड़ा हमें बेटर लग रहा है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस थोड़ी कम होते हैं दिख रही है। आउटलुक उन्होंने कहा नियर टर्म में अच्छी दिख रही है और कंपनी ने जो थोड़ी सी सेल्स डिक्लाइन की थी फर्स्ट वॉल्यूम में वो भी थोड़ा सा हायर एमआरपी के चलते मैर ऑफ हो चुका है। एचडीएफसी बैंक के लिए पॉजिटिव न्यूज है कि जो मुंबई की एनसीटी बैंक है उन्होंने दोनों कंपनीज को मर्जर के लिए अप्रूवल दे दिया है। ऑलरेडी इनके पास सेबी सीसीआई और शेयर होल्डर्स का अप्रूवल आ चुका था आरबीआई का भी और दोनों स्टॉक एक्सचेंज का भी अप्रूवल आ चुका है। सो फाइनल अप्रूवल स्टेज पे है। अभी एचडीएफसी बैंक से वेट कर रहा है क्लैरिटी आरबीआई के लिए जो कि इनकी एसएलआर और सीआरआर का जो है उसको जो कि पीएसएल रिक्वायरमेंट के लिए इसके लिए हमें लगता है मर्जर सेकेंड या थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024 में कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज हम देखेंगे यूबीएस ने क्रेडिट स्विस को बाय कर दिया है $3.2 बिलियन की ये डील रहेगी। इससे जो डेट मार्केट में टर्मोइल है वो थोड़ा सा रुक सकता है और ऐसे थोड़ी रिमोट भी फैल रही है जो कि सेंट्रल बैंक है वो उन्हें प्रोवाइड करेंगे लिक्विडिटी जहाँ पे है तो क्वांटिटेटिव ईजिंग के लिए रहेगा। सो एक पॉजिटिव रह सकता है मार्केट के लिए। जैसे हम देख रहे हैं एफआईएस की शॉर्ट पोजीशन है हाईएस्ट है मार्केट में। सो ट्रेड कहीं भी जा सकता है यहाँ से और कितने ही वो शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि 90:10 का रेशियो चल रहा है। सो यहाँ से अगर हमें थोड़ा सा कूल ऑफ दिख सकता है। सन फार्मा ने कहा कि उनकी जो फेज 3 है स्कैल्प हेड गेट ग्रोथ उसमें उन्हें सक्सेस मिला है। गोदावरी पावर इस्पात ने भी 250 करोड़ जुटा लिए हैं बायबैक से। जीएमआर एयरपोर्ट ने और उनकी जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की मर्जर है तो मर्ज हो रही है दोनों कंपनीज और वो कंपनी भी रेस करी 2900 करोड़ एफसीसीबी के लिए 10 ईयर बेसिस के लिए पेरिस एयरपोर्ट के लिए। मोल्डिंग पैकेजिंग को भी ग्रासिम से एक ऑर्डर मिला है। वे अपनी कंपनी को कोलोकेट करना चाहती है रायगढ़ बेस में। वाबर टेक को बांग्लादेश में ऑर्डर मिला है बेसिकली 800 करोड़ का ऑर्डर है 200 मिलियन लीटर पर डे का सीवेज वाटरवेज और उसको ट्रीट करने। पुतिन ने नेगोशिएट करना चाहते हैं चाइना के साथ जैसे ईरान और सऊदी अरेबिया की चाइना ने डील की तो चाइना अभी रशिया में चाइना की जो प्रेसिडेंट वो रशिया गए हैं वहाँ पे वो बातचीत कर रहे हैं। तो मोस्टली मुझे लगता है कि रशिया से भी यूक्रेन के प्रेसिडेंट से भी बातचीत कर सकते हैं और जो एक ये इनके बीच में भी एक डील या ब्रोकर कर सकते हैं। सो इससे थोड़ी जो इंटरनेशनल जो इन्फ्लेशन है और उसको भी थोड़ा ईज ऑफ आकर दिख सकता है। बीपीसीएल को भी 936 करोड़ अलॉट किए गए 7.58 के इंटरेस्ट के साथ। टीटागढ़ वैगन्स का नाम चेंज हो रहा है टीटागढ़ रेलवे सिस्टम का। नजारा टेक ने भी बायबैक कंप्लीट कर लिया है 16 करोड़ का बायबैक है। टोटल 70.71 की एक्जिस्टिंग प्रमोटर इंट्रोड्यूस टेक से बढ़ के 74% हो गई है। अडानी वेलवर ने कहा कि उनका जो फॉर्च्यून ब्रांड है वो नॉर्दर्न इंडिया में एक्सपांड करना चाहते हैं वो हाइपर लोकल करना चाहेंगे उसे। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व देखा जाए तो 3 मंथ लो पे है $560 बिलियन का टोटल अभी फॉरेक्स रिजर्व है और हमें आउटफ्लो होता हुआ दिखा है। गेल इंडिया और शेल एनर्जी ने कहा कि एमओयू साइन करे ईथीन के लिए और हाइड्रोक्लोरो कार्बन के लिए कर रहे हैं। सो ओवरऑल एक पॉजिटिव न्यूज रहेगा। गवर्नमेंट ने कहा इफको कोल इंडिया दोनों साथ में मिलकर नैनो डीएपी के लिए मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ये टोटल 2 लाख बॉटल मैन्युफैक्चर करेंगे पर ईयर और ये 500 ml बॉटल सेल करेंगे। एक न्यूज है पीएलआई की जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट की जो उन्हें स्कीम थी अप्रैल से लेकर फिर 23 का डेटा आया। एक्सपोर्ट्स में देखा जाए 61% का जम देखा है जो कि पहले 1.3 लाख करोड़ से बढ़कर 1.66 लाख करोड़ है। इसमें कंट्रीब्यूशन सबसे अच्छा मोबाइल सेक्शन में देखा जो कि 47% का जम देखा 11 मंथ पे जो कि 78,375 करोड़ हो गया जो कि करंटली 1,38,000 करोड़ के आसपास का है। तो ओवरऑल देखा जाए तो डबल 2x ग्रोथ है। पीएलएफ ने कहा कि वे 3,500 करोड़ पे इन्वेस्ट करेंगे टोटल 4 इयर्स का गुरुग्राम का प्रोजेक्ट है उसके लिए। हैवेल्स ने भी कहा कि उन्होंने एक नया एसी का फैसिलिटी स्टार्ट किया है चित्तौड़ आंध्र प्रदेश में।
सो ओवरऑल एक पॉजिटिव देगा हेवल्स के। सूला वाइन्स ने कहा कि ग्रेप की हार्वेस्ट इस बार एक्सेलेंट है, पिछले 3 साल से देखा है ग्रेप की ओवरऑल हार्वेस्ट अच्छी थी। और ग्रीन फ्लाई ने कहा कि उनकी जो एमडीएफ की वडोदरा फैसिलिटी गुजरात में वो भी उन्होंने स्टार्ट कर दी है। सो दैट्स इज आल्सो पॉजिटिव फॉर ग्रीन फ्लाई। कैन वेल्सपन को आपने कहा कि उन्हें एनसीएलटी से अप्रूवल मिल गया है जो कि प्रॉपर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के लिए, और जो रिस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में जो कि सिंटेक्स बीएपीएल के साथ। कैंफिन उनके भी जो सीईओ है वो चेंज हो गए हैं, सुरेश श्रीनिवासन रहेंगे एमडी और सीईओ, और कंपनी को इमीडिएट इफेक्ट के साथ रहेगा। Technical and derivatives outlook. So during the last week, we saw there was a selling pressure in the market, and market was down by close to 1.5% in the weekly charts. So with the decline, the market has already corrected close to 5%, and it's in the oversold zone. So there is so whenever there is a one-way correction, there is a tendency to see some amount of bounce back. That is one of the reason why on the Friday session we saw index recovering from the low and Nifty closing at the 17,100 level. So we carry that view, and we believe that this bounce back should head towards 17,200, 17,300. That is the level which what we are watching. Having said this, the last week low, which is at 16,850, is also the crucial support levels. This bounce back, as of now, it looks like it may get stuck at 17,200, 17,300. And if 16,850 levels are broken, then there can be further damage in the index. So we are a bit cautious on the market. It's a range bound kind of week which we are expecting, where higher side may can see a cap around 17,300, 17,400 level. The good thing on Friday's session was the India VIX, which was moving on at the higher higher levels, has was down by minus 8.94%, closing at 14.77. So for the temporary basis, it looked like the India VIX has taken resistance at 1711, which is a good sign. So largely it's a range bound kind of a market, and we will maintain a cautious view for next 1 or 2 trading session. Coming to Bank Nifty, even the Bank Nifty looks positive on charts. For example, because the way the Bank Nifty, we saw the correction in Nifty, the Bank Nifty has not seen that kind of correction. And Bank Nifty is almost close to the value of its 200-day moving average, which is at 39,632. So we believe that as and when the Bank Nifty crosses 40,000 on the upside, the Bank Nifty will see some good strength on the higher side. These stocks like HDFC Bank, ICICI Bank should be the counters which should lead the upside rally. So as compared to Nifty and Bank Nifty looks more stronger at current level. Sector specific, we are liking capital goods, and for the trading bonds, we are liking OMCs. So maybe since the crude is been correcting, OMC stocks will be in focus. So whenever the crude corrects, even the paint stocks are do look good. So within that, Asian Paints is something which is looking very positive on charts. Coming to derivatives data, so the Nifty futures has seen a short covering in the Friday session to the tune of minus 0.40%, which is a decrease of 0.06 million share. The put call ratio has seen some recovery from 0.75 to 0.88 ratio. The major call additions were seen at 17,500 and 17,000 strike price. So on the put front, again 17,000 and 17,100. So this would be the supported resistance from the derivatives point of view. In Bank Nifty, even the Bank Nifty has seen a short covering to the tune of 2.02%, which is a decrease of 0.11 million shares. Even the put PCR has recovered from 0.78 to 0.83, adding to a little bit of strength. The major call additions were seen at 40,000 strike price, so that will be a resistance, and at the lower side 39,500 put option, so that will be the support. Coming to FI data, again the FIs on the index future has gone short, close to 8,000 contract, and that now the net long short ratio has come to 10%, which is at the very lowest point. So with this, I think we should be seeing some bounce. Today's decline can be viewed as a buying opportunity for the day specific, since we are
we should be seeing the one leg of bounce on the higher side. Very cautious note, the previous week low, 17,000, six- 16,850 for the Nifty and 38,600 for the Bank Nifty. This would be the very important supports for the Nifty, Nifty and Bank Nifty. So if that is broken, then we'll have a very cautious view. Thank you, and that's all. Over to Vishal. Yeah, good morning, sir. Good morning, team. So starting with the couple of fundamental side news. First is on HDFC and HDFC Bank on a positive side. Mumbai bench of NCLT has approved the merger of mortgage financer HDFC Limited into HDFC Bank. So I think if you look at a couple of approvals which this merger has received, is SEBI approval is received, CCI shareholder approval for both the entity, RBI and both the exchanges. Now, while all approvals are in place, HDFC Bank is still awaiting clarity on RBI on the forbearance part, that is on whether to maintain SLR, CRR, and as well as PSL requirement. This merger is expected to complete in the second and third quarter of the this FY24. We believe the development is positive, and we continue to have a buy rating on both the stock. On Relaxo, we met the CFO of Relaxo Footwear to gather and understand the current business environment. Company has witnessed a decline in sales volume in 9 months as product offtake was marred by higher MRP products. The majority of the raw material prices have corrected and should benefit on earnings improvement in the near term. I think overall in terms of footwear, we have a positive view on Relaxo Footwear and with the target price of 876. Next, which is a bit of negative news on IT space. So Wipro has announced that it had laid off around 120 odd employees in the US as part of business realignment needs. The company stated that these layoffs will begin from May. This comes after it had previously asked a fresher to join at a lower pay. And we believe the senior level exit pay cuts and layoff basically, overall it gives us a thought process like, how exactly the macro environment is and that what IT space is going through. Next news flow is on Tata Steel. So Tata Steel Long Products and tin plate company, they have signed an MOU for 8 product categories for under the Ministry of Steel for the PLI scheme. Now this is a positive, and a total 57 MOUs with 27 companies that has been signed with the ministry. And as and when this PLI scheme gather, so overall from a country point of view, the manufacturing strength will further pick up. And for Tata Steel, this MOU whenever formal announcement on exact capex is laid out and what exactly they see in terms of revenue visibility for this particular PLI scheme. So that will bode well for Tata Steel. Next is on APL Apollo, which is a positive set of development. Their company has launched the next generation steel building solution to ensure better and faster construction. The entire construction process ensure that the ecological balance is fairly maintained with the zero air pollution. That is basically the next generation steel building solution which APL Apollo has recently launched. We continue to have a positive view on APL Apollo. Next in on Cochin Shipyard. So it has received a prestigious 550 crore order from global giants Samskip Group of Norway, and this is a positive development and further strengthen the order book of the company. Next is on Navin Fluorine, which is a positive side. The board of Navin Fluorine, wholly owned subsidiary of the company, has approved a capital expenditure of 450 odd crore for setting up a hydrofluoric acid facility at Dahej. The new this capacity facility will come in next 2 odd years. All in all, this is positive in terms of further expanding and giving a growth plan for the Navin Fluorine. Next is on SKF India. So on the positive side, a company has approved investment of equity participation in a special purpose vehicle for the commissioning of captive power plant. That is positive for in terms of securing the energy security for the company. Next thing from my side is on RVNL. So company has been selected as the lowest bidder for 4 contracts. That is for the Haryana Orbital Rail Corporation. This is worth 1,089 in terms of order received. This is positive for RVNL. Last thing from my side is on Aditya Birla Fashion.
So as per the credit rating agency CRISIL, it has revised the rating of company from AA to AA plus, and outlook is stable for the company. Yeah, so that's all from my side, and I'll hand it over the team. Over to you. Thank you, sir. Few updates from my side. First update on Torrent Pharma. The US FDA has conducted inspection of its oral oncology manufacturing facility at Gujarat and issue of one observation. So company said it will respond the US regulator within a stipulated timeline and work closely with the to address the observation at the earliest. The next update on Sumitomo Chemicals. So Gujarat Pollution Control Board has revoked closure order for the production at the company's Bhavnagar site. So hence the plant is now allowed to resume the operation. Tata Consumer Product Company ceased negotiation with Bisleri for the potential acquisition. It said no definitive agreement or binding commitment has been signed on this matter. The next update on Canfin Home. The board has appointed Suresh Srinivasan Iyer as the Managing Director and Chief Executive Officer of the company with the immediate effect. Last update on Westman Corporation India. So the NCLT has approved the resolution plan submitted by the consortium of the plastic products with respect to corporate insolvency resolution process of Syntex BAPL